So today we are going to solve the question which already came in ICSE 2018 in computer application exam. The question was int res equals to a. So basically the value of a will going to initialize in the variable res, and if we say int res equal to a, it's mean res is a variable, the data type of res is int, and we have to store the value of a inside the variable res, because in programming language the value will going to store from right to left side. So if we assume this variable res like this, but we cannot store capital A inside it because it is integer kind of variable, so it can hold only integer values. So we need to store ASCII value of A. So the ASCII value of capital A is 65. 65 is an integer, so it can store inside the variable res easily. So the answer will be the value of res is 65. ICSE computer application in the year 2018. The question was classify the following as primitive or non-primitive data types. So we have to find out which one is primitive data type and which one is non-primitive data type. So before that, we need to know how many data types are there and what are they. Basically, two data types are there in Java. One is system defined or primitive data type, and another one is user defined or non-primitive data type. So in case of non-primitive data type, the examples are array and class. And for primitive data type, the examples are char, boolean, byte, short, int, long, float, and double. So the answer of this following question will be for char, it will be primitive data type, array non-primitive, int again primitive, and classes again non-primitive. So this is the solution of this question. ICSE 2018 computer application exam, the question was convert the following if-else if construct into switch case. So now we have to convert this if-else statement into switch case statement. So what is the common point between both? Switch case can also perform test on equality, and if-else is also perform test on equality. This point is common for both, and here equality test performs here. So the answer will be switch in bracket the variable name. Here the variable name is var. So in first bracket var brace open case 1, because here var equal to 1, and then this statement will going to be right as it is. Then break statement. Next var equal to 2. So case 2, then the next statement system out.println better, then again break statement, then last condition is var equal to 3, so case 3 colon, then next statement is system out.println best, then again break statement, then else. In switch case we have to write else as default statement, default colon, then this statement system out.println invalid, then brace is closed. So this is the answer of this following question. ICSE computer application examination in the year 2018 ये क्वेश्चन आया हुआ था, write the output of the following. तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो ऑलरेडी प्रीवियस आईसीसी ईयर्स में आया हुआ है वो काफी रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी एज वेल एज नेक्स्ट आईसीएसई एग्जाम्स के लिए भी। तो अगर आप लोगों को प्रीवियस 10 to 12 या 10 to 15 ईयर्स अच्छे से आता है तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा और फुल मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको टारगेट रखना है कि हम लोगों को 10 to ईयर्स कैसे भी सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, पहले तो फर्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा इनक्रेडिबल ये वाला वर्ड, देन उसके बाद बैकस्लैश एन है। ये बैकस्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली नेक्स्ट वाला जो वर्ड है, मतलब बैकस्लैश एन के बाद में जो ये वर्ड दिख रहा है वर्ल्ड, तो ये एक्चुअली इनक्रेडिबल के नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, सेम लाइन में नहीं प्रिंट होगा डिस्प्ले के टाइम पे। सो टर्मिनल बॉक्स में हम लोगों को क्या दिखेगा, इनक्रेडिबल, फिर उसके नेक्स्ट लाइन पे वर्ल्ड। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2018 में आया हुआ था, नेम द पैकेज दैट कंटेन रैपर क्लासेस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा java.lang.asterisk then semicolon। तो java.lang बेसिकली ये पैकेज रैपर क्लासेस को कंटेन करता है।